Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and welcome to another video. In this video we will be talking about synapses, ठीक है, और हम थोड़ा सा reflexes का भी introduction कर लेंगे, and if the video does not get too long then I do plan on finishing reflexes in this video. So guys, talking about synapses, ठीक है, synapses के अंदर ना हम लोगों ने थोड़ी सी पहले let's look at something from a MDCAT perspective, ठीक है. तो हमारे पास ना synapses हम लोगों ने जनरली A levels में पढ़ा होता है कि we only have chemical synapses, right? लेकिन in reality and in your MDCAT we are going to be having electrical and chemical ones, and by MDCAT I mean all of your medical school entrance exams, ठीक है. अच्छा guys, electrical जो होते हैं ना, these are going to be carrying electrical impulses, ठीक है. I'll just write impulses, okay, and these are going to be separated through 0.2 nanometer only, ठीक है, मतलब they're very close together. And यहाँ पे क्या है, यहाँ पे we're going to be using a neurotransmitter, and guys, along with using a neurotransmitter, the gap over here is going to be 20 nanometers. Please memorize these things, okay? अच्छा guys, if I quickly make both of them, ये ना थोड़ा इस तरह करके होता है, ठीक है. It doesn't really have like a typical neurotransmitter look, okay? Sort of like this, okay? बहुत थोड़ा सा gap होता है. This on the other hand has a, let me draw it here, has a proper neurotransmitter look. न्यूरोट्रांसमीटर कह रहा हूँ, प्रॉपर साइनाप्स लोग, ठीक है. ये वाले बहुत छोटे होते हैं, दीज एग्जिस्ट ओनली इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. ज़्यादातर हमारे पास ये होते हैं, ठीक है. इनको बस पढ़ के अभी के लिए जस्ट रीड थ्रू दिस, ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, दैट्स इट. हम लोगों ने जो वर्किंग देखनी है, वी आर गोइंग टू बी लुकिंग इनटू हाउ केमिकल साइनाप्सेस वर्क, ओके. ऑल यू नीड टू नो इज just the existence of electrical synapses, all right? That's it guys, and please, electrical synapses, we're not going to be utilizing any neurotransmitter. Please don't make any stupid mistake, okay? All right guys, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है. अच्छा, हमारे पास जो साइनाप्सेस होते हैं ना, ठीक है, साइनाप्सेस कैन बी ऑफ रियली डिफरेंट टाइप्स, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट कोलिनर्जिक साइनाप्सेस, ठीक है. कोलिनर्जिक साइनाप्सेस, इफ दे से कि बेटा एक कोलिनर्जिक साइनाप्स है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा यूज हो रहा है, तो प्लीज गाइज, प्लीज इस चीज को याद कर लो कि उसमें एसिटाइल कोलाइन हो रहा होगा. इट्स रियली इजी बिकॉज कोलाइन एंड कोलिनर्जिक, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, ओके. सो ये हमारे पास यूज हो रहे हैं, और कोलिनर्जिक साइनाप्स इज अ केमिकल साइनाप्स, ठीक है. और इसके साथ साथ केमिकल साइनाप्स, एंड द वे इट वर्क्स इज कि हमारे पास ना एक छोटा सा गैप होता है. अच्छा, लेट्स जस्ट मेक इट आउट, ठीक है. आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर. This is what we have. My drawing is actually becoming really good now. Okay, so guys, first of all, अच्छा, मैं साथ साथ ना पॉइंट्स लिखता जाता हूँ और मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है. Okay, because question के अंदर they're not going to be giving you a diagram. In most cases they'll just give you a statement, so I want you guys to like read, see how it will be written, okay. अच्छा, first of all there's something called a synaptic cleft, ठीक है. synaptic cleft क्या होता है कि ये A levels वाली चीज़ें, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. just watch it on 2x if you think कि नहीं ये थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है. but please इन चीज़ों को रिवाइज कर लो. ये जो जगह है पूरी, इसको मैं नाम देता हूँ अपना synaptic cleft का, ठीक है. और इसका साइज होना है 20 to 30 nanometers. I really hope you guys can't hear the cats yelling in the background. Cats are just having a gang war or something. Anyways, synaptic cleft का क्या distance होता है, 20 nanometers, but in certain books it's also described as 30 nanometers wide, ठीक है. अभी के लिए this range is enough for you guys, but when you guys are preparing for your MDCAT, then please guys अपनी provincial किताब, या अगर आप फेडरल बोर्ड का दे रहे हो MDCAT, तो फेडरल किताब खोल के देख लीजिएगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ देख ली. इसके बाद गाइज हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस गाइज? द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज द प्री, दिस इज द पोस्ट, ओके. दिस इज द साइनेप्स. दिस एंटायर रीजन आई कॉल इट द साइनेप्स. इसमें कुछ मुश्किल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. एंड गाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये जो चीज़ है स्पेसिफिकली, विच फाइबर इज कमिंग, दिस इज एन एक्सॉन, ठीक है. एक्सॉन कैरीज इम्पल्सेस अवे, ठीक है. दिस इज अ एक्सॉन, ठीक है. इसकी गलती ना कर देना, ये एक्सॉन आ रहा है, ठीक है. ओके गाइस, नीचे क्या है, नीचे डेंड्राइट है, बिकॉज डेंड्राइट कैरी देम टूवर्ड्स. डेंड्राइट भी हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, एनीवेज, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है. प्री इज बिफोर द साइनेप्स,
and post is after the synapse. This is really simple stuff, isn't it? Okay, अब हम लोग अगली चीज के बारे में बात करते हैं. That is going to be our synaptic knob. Okay guys, what is the synaptic knob? This is the synaptic knob. Do you guys see? ये दरवाजे की जैसे knob होती है ना, this is called a synaptic knob. Okay guys, I want you to know a couple of things. Okay, synaptic knob में ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, we have a lot of mitochondria. Why do we have a lot of mitochondria? We'll look at it in a minute. ठीक है, लेकिन एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होता है, इसके साथ साथ हमारे पास synaptic vesicles मौजूद होते हैं. ठीक है, we're going to be having synaptic vesicles, and these synaptic vesicles are essentially carrying all of our neurotransmitters. ठीक है, अच्छा, now let's move on guys. Alright guys, so we were talking about synapses. ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि यहाँ से इम्पल्स आती है और यहाँ पे से केमिकल्स रिलीज होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होते हैं और फिर वो इधर आके अटैच होते हैं, एंड देन दे गो ओवर हियर. But I want to talk a bit more about the functions of synapses, because this is where they essentially test you guys. ठीक है, तो functions of synapses की अगर हम जल्दी से बात करें, and कुछ functions are going to be very simple functions of synapses, and some functions are going to be new to you guys. ठीक है, तो let's just quickly look at them. And also for A-level students as well, these things are going to be a bit new because A-levels may be hardly go into this much detail regarding the functions. First of all, pretty simple. It allows for communication between neurons. ठीक है, communication between neurons. This is going to be the first thing. Okay, the second thing is going to be it allows unidirectional transport, and that is really important. I don't want a motor neuron. Motor neuron अगर innervation carry कर रहा है, it should be carrying innervation from my upper motor neuron to my lower motor neuron. दिमाग से वो नीचे लेके आ रहा है. I don't want कि वो नीचे से ऊपर लेके आ रहा है. ठीक है, it's not designed in that way. It has to be unidirectional, and this is very important. ठीक है, कि it should only be in one direction. Okay, all right. अब इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है. They act as junctions. What do we mean by junctions? By junctions I mean कि they're essentially going to be allowing me to either converge or diverge. ठीक है guys, what do I mean by converge? By converge I mean कि जो मेरी number of impulses आ रही है ना, a number of impulses can be, okay, a number of impulses can be combined into one. Okay, let me make a really rudimentary diagram. Just a second. ऐसे करके let's say एक ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है और एक ये आ रही है. ठीक है, so this is convergence. Okay, different neurons impulses आ रही हैं and they can be combined into one. Okay, all right. What about divergence? ठीक है, divergence इसका उल्टा होगा कि one impulse can be spread out. Diverge कर सकते हैं, spread out. Okay guys, if I quickly make this one out, इसकी थोड़ी सी ड्राइंग मुश्किल होगी. ठीक है, let me try. I'll have to try it a bit. ऐसे. ठीक है, कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ से इम्पल्स आ रही है. ठीक है, सो द इम्पल्स इज कमिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो वन इम्पल्स और हम उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या था कि इधर से इम्पल्स आ रही है, इधर से इम्पल्स आ रही है, इधर से इम्पल्स आ रही है, हम उसको एक में कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एग्जिट पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द, सॉरी, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द एग्जिट पॉइंट. ये जो ये सारे पॉइंट्स है ना, these are the exit points. Exit. Let me explain this quickly. ये सारे either one of them can release neurotransmitter or all of them can release neurotransmitter, and then this is going this way. यहाँ पे क्या है कि this one is releasing neurotransmitter, then synaptic knob releases neurotransmitters. ठीक है, ये छोटी छोटी मैंने knobs बनाई है. Alright. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है that the synaptic knob is this, तो this is going to be releasing neurotransmitters और impulse मेरी spread out कर रही है. ठीक है, तो this is my exit. ठीक है, this is my exit, sorry, this is my exit. मतलब जो मेरी डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इधर मेरी डायरेक्शन इस तरफ है. ठीक है, यहाँ पे एक में कंबाइन हो रही है, यहाँ पे एक से मल्टीपल में जा रही है. ठीक है,
So these are the functions of synapses that we've talked about. Okay, and then there's some minor ones that they can test. ठीक है, so okay, so talking about the minor ones, ठीक है, एक तो हमारे पास overstimulation, can they prevent overstimulation, because इनकी भी ना एक threshold value होती है, ठीक है, तो they prevent overstimulation and fatigue, कि हमारा दिमाग sensory overload में ना जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ they are also going to be involved in memory and learning, ठीक है. So there's a word for this, plasticity करके होता है, neuronal plasticity, I think, I don't exactly remember it, memory and learning, ठीक है, लेकिन that's not for you guys, ये मेरे neurosciences के एग्जाम की चीज़ थी, ठीक है, लेकिन this is what you need to know. Okay guys, अब हम लोगों ने यहाँ तक हम आगे एक लास्ट चीज़ हम लोगों ने करनी है, which is going to be our synaptic transmission in itself. We've talked about synapses in introduction, we've talked about functions of synapses. Now let's talk about how synaptic transmission actually takes place. Alright guys, so talking about synaptic transmission, and this is going to be pretty simple. First of all, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक action potential आएगा, एक impulse आएगी at the presynaptic neuron, ठीक है, at the presynaptic neuron एक हमारे पास एक impulse आएगी, ठीक है, या आप कुछ से कि synaptic knob पे आएगी. Okay guys, अब हमारे पास क्या होगा, because of this impulse, calcium, sorry, अभी तक हम लोग सोडियम और पोटेशियम की बात करते थे, लेकिन अब कैल्शियम आता है. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल ओपन, Ca2+ आयंस, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस विल ओपन. ओके, सो गाइस व्हेन दीज ओपन, इनकी ओपनिंग की वजह से हमारे पास होता क्या है, एंड एक सेकेंड, आयंस विल मूव इनसाइड इन द नॉब, इन द साइनेप्टिक नॉब. ऑलराइट, ओके. So guys, moving on to the second point, अब हमारा जो कैल्शियम है ना, this calcium is essentially going to act as a driver, ठीक है, and this calcium will cause the fusing of synaptic vesicles. Synaptic vesicles वहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कैल्शियम जाके synaptic vesicles को fuse करवा देता है presynaptic membrane के साथ. This is really interesting stuff वैसे, ठीक है, presynaptic membrane के साथ. And this guys, this is what is going to be, एक second, let's just make another point. This is what releases acetylcholine into the synapse. And guys, you should know the process by which this occurs, and this is going to be called exocytosis. ठीक है, exocytosis हो जाते हैं और हमारे vesicles move करना शुरू हो जाते हैं. Okay, and then guys, the next thing that I want you to know, because they have given MCQs such as this, जो acetylcholine है ना, in the synaptic cleft, ठीक है, in the synaptic cleft, which is this valley between the presynaptic and postsynaptic, यहाँ पे acetylcholine is going to be moving through the process of diffusion. What do I mean? ठीक है, यहाँ पे impulse आया, impulse ने कैल्शियम चैनल्स खुलवा दिए, कैल्शियम अंदर आ गया, कैल्शियम ने ऐसे करके had synaptic vesicles, calcium fused with them, made them move to the surface where they exited through exocytosis. And guys, exocytosis you should know is an active system, ठीक है. अब यहाँ पे ना इनकी concentration, because ये सारे एकदम से रिलीज हुए, concentration is high, यहाँ पे concentration is obviously low, so there's going to be simple diffusion over here, and through diffusion it is going to move across the system. Alright, now guys, moving on to the next point. अब acetylcholine हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर आ गया है, ठीक है, अब वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर क्या करेगा. सो गाइस, ओवर हियर वी आर गोइंग टू बी हैविंग व्हाट आर कॉल्ड न्यूरोरिसेप्टर्स, ठीक है, न्यूरोरिसेप्टर्स होते हैं. एंड फॉर योर एग्जाम पर्पसेस यू शुड बी अवेयर कि acetylcholine जो होता है, acetylcholine, दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी बाइंडिंग टू receptor sites on essentially 2/5 of the protein, 2/5 subunits of neuroreceptors, ठीक है. If they ask you किन interact करते हैं, तो you will say कि 2 out of 5 subunits पर वो attach करता है. And guys, this attachment, ठीक है, of acetylcholine to the subunits of the neuroreceptor, this is going to be essentially leading me to the 6th point, which is कि अब मेरे पास अपनी action potential generate हो जाए, ठीक है. एंड दिस गाइज, इसका एक स्पेसिफिक नाम है दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे डू टेंड टू आस्क यू गाइज, दैट इज कि दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड EPSP, ठीक है, EPSP, which stands for excitatory post synaptic
let me see if there's space. Okay, here excitatory postsynaptic potential. ठीक है, really simple. Excitatory postsynaptic potential. इसका एक और भी होता है inhibitory postsynaptic potential which works with GABA, but I don't think that's ever going to be tested for you guys. It's not a part of the syllabus. Okay, अब डर नहीं जाना. अच्छा, हमारे पास एक enzyme होता है. This is just the last thing. The enzyme is called acetylcholinesterase. ठीक है, it's also written as this ACHE एक. ठीक है, it stands for acetylcholinesterase. Okay. And what does this do? So guys, this is just a second. I don't know. GoodNotes is just really acting up today. Okay. This is going to be breaking acetylcholine. This is going to be breaking acetylcholine into two things. The two things being acetate and choline. And now guys, these things can diffuse back. अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं 7th point पे कि acetate and choline, these are going to diffuse back. Okay guys, acetate and choline is going to be diffusing back. Okay, अच्छा, अब यहाँ पे this brings us to our last point and then we are done with this video. That is कि I am going to be having mitochondria, ठीक है, which is going to be generating ATP, and this ATP is going to be used to regenerate acetylcholine. Okay guys, ये सारा मेरे पास system काम कर रहा है, ठीक है, and then I can further use it. Okay, and guys, this is how a synapse work. This is all that you need to know regarding a synapse, and I hope you guys had fun, and I will see you guys in the next videos, which are going to be much more fun because we'll be talking about the different nervous systems, we'll be talking about different parts of the brain, and so on and so forth. Thank you so much for watching the videos, and Allah Hafiz.